Hi guys, welcome to my Express FAQ series on Ladakh. तो कौन जाना चाहता है इस साल लद्दाख? दुनिया भर में न जाने कितने लोग लद्दाख जाने का सपना देखते हैं. I myself dreamed about it for 15 years before I actually got to go there. I want to share all the knowledge and experience that I have gained from my trip to help you plan your own Ladakh adventure. So let's go. Hi guys, so in this video I will talk about the top must have items as per me that I feel you should take for your Ladakh trip. मैं इस वीडियो में ऐसे आइटम्स के बारे में नहीं बात करूँगा कि आपको कौन से कपड़े लेके जाने हैं या एनीथिंग एल्स लाइक दैट, बट what my suggestion is कि for sure at least these items that I will show you, you should definitely think about carrying with you when you're planning a trip to Ladakh. Okay, so convenience के लिए I have already laid out all the items here on this table so that I can talk about each one of them. So the first thing in this corner, definitely carry two sets of gloves with you. One, your summer gloves. So for example, I'll be traveling from Pune to Ladakh. My first leg will be from Pune to Manali, 4 days. It's going to be summers, it will be rainy as well. So वहाँ पे I will definitely not need these leather gloves. These are full grain leather gloves from Rhinox, the Storm EVO 3. I prefer these that kind of a ride. These are pure summer gloves. These are the Rhinox Helium GT. Another thing is gloves आपके गीले हो सकते हैं due to rain, due to any kind of water crossing, so on and so forth. It's always good to carry two sets of gloves. So I spoke about rain and about water crossings. So these are something that I would recommend as well. दिस इज़ अ पैक ऑफ 50 नाइट्राइल रबर ग्लव्स. इतना बड़ा पैक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन कैरी 2 pairs of them. So basically you can use them to keep your hands dry when it is raining or if you are doing a lot of water crossings. But the main thing where I find them useful is ठंड में. तो आप अगर से लेह लद्दाख मनाली ये सब जगहों में राइड कर रहे हो, वहाँ पे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट व्हेन यू स्टार्ट क्लाइंबिंग एनी ऑफ द हाई पासेस, आप जितना ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ जाओगे उतना आपको बहुत ठंड लगेगी, स्पेशली इन द फिंगर्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू सी वन ऑफ माई वीडियोज़ इन विच आई एम क्लाइंबिंग कारदुंगला टॉप, जैसे जैसे मैं चढ़ते जा रहा हूँ, माई फिंगर्स लिटरली स्टार्टेड बर्निंग. आई वॉज नॉट वेयरिंग दीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई वॉज जस्ट वेयरिंग रेगुलर राइडिंग ग्लव्स. Wow, just 10 minutes since I spoke about it last. My fingertips are burning because of the cold. I hope I reach the top soon. Yeah, the funny thing is the rest of me is fine. I'm not feeling cold as such, only my fingertips. So these are definitely something that I would recommend you carry with you. Third thing, carry a pair of waterproof socks. These are from Rhinox. They'll not only keep your feet, your legs safe from water. They, आपके पैर गीले नहीं हो गए तो ठंड भी नहीं लगेगी. So that is an added benefit. You will be able to keep your feet warm, which is very useful, which is required in the kind of cold places that you will be traveling to when you are traveling to Ladakh. Ladakh is a high altitude cold desert. The cold varies from place to place. जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे, for example, when you go to a high altitude place such as Pangong So, such as Hanle, बहुत ठंड होती है. And don't go by the temperature that your maps will show you. If you check right now, it does not show you the wind that is going on right now. ये जो wind होता है उसकी वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है, and you will experience it when you get there. So coming to cold, I am going to be carrying these three things here.
So this is a thermal wear from Jockey. Definitely useful. I had used this when I was in Pangong Lake. वहाँ पे night temperatures went to -1, -2 degrees. It was really cold. In spite of wearing this, I can tell you हमारी फट गई थी. हमको नींद ही नहीं आई थी रात भर. Okay, so that is the reason why ये एक half sweater है. I'm going to be carry this as well. And on top of that, this is the Rhinox winter liner. It's good for up to -5 degrees. इससे ज़्यादा ठंड तो अभी जुलाई का महीना चल रहा है, इससे ज़्यादा ठंड तो नहीं होगी. आई एम होपफुल अबाउट दैट. देन कमिंग टू रेन, सो आई एम गोना बी कैरिंग दीज टू थिंग्स. ये जो है ये डेकाथलॉन से है. दिस इज अ रेन पॉन्चो. मोर देन अ पॉन्चो, इट इज़ अ रेन लाइनर विच परफेक्टली फिट्स ऑन टॉप ऑफ माई राइडिंग जैकेट. एंड ये रेन पैंट जो है ये जील की है. Much better quality than what you get from Rhinox or even from Decathlon. I was checking out Decathlon yesterday, but I felt that what I already have is much better quality. तो ये essentials है. इतने सारे essentials to definitely carry with you when you're planning a trip to Ladakh. Apart from that, coming to luggage systems, तो this is the tail bag. ओके, आई वुड रिकमेंड कि आप हार्ड पैनियर्स मत कैरी करिए. इट मेक्स योर बाइक हैवी एंड देर इज़ अ रिस्क दैट आइदर योर पैनियर इट सेल्फ, द माउंट ऑन विच द पैनियर इज लोडेड, द रैक, द बोल्ट्स. लद्दाख के रोड्स दे आर नॉट ऑल नाइस एंड वेरी गुड क्वालिटी. मैनी ऑफ देम आर ऑफ रोड्स एंड वहाँ पे ब्रेकेज के चांसेस है. एंड ट्रस्ट मी, व्हाट आर यू गोना डू इफ योर रैक और योर बोल्ट्स ब्रेक अप देयर. एटलीस्ट ये सॉफ्ट लगेज रहेगा तो आप इसको बांध के रख सकते हो कहीं तो. सो recommended from my side, don't carry hard panniers, carry soft luggage like this, either a tail bag which I prefer, or then saddle bags bhi aate hai. If you prefer saddle bags, you can use those. Along with that, coming to the rain, the water crossings, etc., inside this tail bag or inside your saddle bag, कैरी दीज काइंड ऑफ ड्राई बैग्स. अपना पूरा सामान ऐसे ड्राई बैग्स में ही स्टोर करके रखना. दिस विल एंश्योर दैट ऑल योर गियर, ऑल योर इलेक्ट्रॉनिक्स, all your clothes etc will stay safe and dry even if your bike gets fully submerged due to some reason. Okay guys, so besides these things that I've spoken about, here are the things that I highly recommend carrying with you. मैं तो मेरी ट्रिप में ये सब चीज़ें कैरी करने ही वाला हूँ. Let me show you what all I have. So एक चीज़ very important है, you need to have Google Maps downloaded on the phone. There's a facility by which you can download offline Google Maps. लद्दाख में प्रीपेड को रेंज नहीं आता and postpaid mobiles from all across our country do work there. I had done the same thing the last time and I recommend you do it as well so that emergency के केस में आपकी ये चीज़ काम आएगी. Besides that, this is my cheat code Fasten Up का कंप्लीट अमीनो एसिड्स BCAA रिकवरी. इसके साथ और एक चीज़ भी आता है ORS, तो आई डोंट हैव इट येट बट आई विल बी परचेजिंग इट. देन ये एक LED हेडलैम्प है, इट्स वेरी पावरफुल. इट इज़ पावर्ड बाय अ AAA बैटरी. ये देख के शायद आप हंस दोगे बट दिस इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग. ओके, एंड इनफैक्ट ये जो बेबी स्किन केयर वाइप्स होते हैं, वेट वाइप्स, दे आर वेरी गुड क्वालिटी, सो आई वुड रिकमेंड यू बाय दोज. This is another useful thing that I found to keep your mobile phone safe. एक स्पेयर की कैरी करना मत भूलना. What if you lose your bike keys? Then you're going to be in a very bad spot, right? So always carry a spare key of your bike. लिप बाम कैरी करना क्योंकि लद्दाख इज़ ए हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट. द एयर इज़ वेरी ड्राई एंड यू विल डेवलप ड्राई लिप्स ओवर देयर. एटलीस्ट एक तो पावर बैंक कैरी करना ही. इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू स्पेशली व्हेन यू गो टू रिमोट एरियाज सच एज जानस्कार, सच एज हानले. वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ओके, कैरी सन ग्लासेस. Okay, sunglasses are something that I highly recommend and a very good quality of sunglasses. The sun in Ladakh बहुत चुभता है वो आँखों में. Okay, it can seriously damage your eyes if they are not protected properly. In fact, वहाँ के locals भी use करते हैं sunglasses. Helmet के अंदर I would recommend rather than keeping your visor closed and rather than wearing a helmet which has a tinted visor,
use sunglasses with a clear visor. Uh, the thing is, Ladakh being a high altitude region, when you're traveling in the mountains, वैसे भी oxygen कम होने वाला है. It is recommended that you keep your visor open so that you get maximum possible air and you don't develop any kind of breathing problems. तो वहाँ पे ये sunglasses definitely useful रहेंगे. Another thing for people like me who wears specs, डेफिनेटली कैरी अ स्पेयर पेयर ऑफ स्पेक्स. अगर वहाँ पे आपके स्पेक्स टूट गए तो इट इज़ likely to be the end of your trip if you don't have a spare. Oh, and also carry high energy protein bars like the ones I am showing here. I had carried them the last time, breakfast bars. They can definitely be of help in an emergency in a tough spot when you are not finding any place to eat. They can keep you charged and keep you going basically. So, guys, these are the must have, must carry items from my point of view. I hope you found this useful and I hope you enjoy your Ladakh ride. Hi, guys. I hope you enjoyed my video and found it useful. Please subscribe करना मत भूलिए. ये आपके लिए तो free है, but it helps me in a huge way. Thanks for watching and see you in the next one.